Hello friends, now we move on next part of Unit 2 Cellular Wireless Network. That topic remaining like कोडिंग एंड एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ब्लॉक एरर करेक्शन कोड, कन्वोल्यूशन कोड, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, 3G वाईफाई एंड वाईमैक्स क्या है वो डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ कोडिंग एंड एरर कंट्रोल. सो एरर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझते हैं. सो एरर दैट इज़ कॉल्ड द नॉइस और error is the main problem in the signal which disturb the reliability of the communication. Means whenever you smoothly transmit your data or signal is smoothly transmit, and if any disturbance, any noise will be occur in your channel, that is called the error. Error control coding is the coding procedure that done to control the occurrence of the error. This technique helps the error detection and error correction. In detail, the error is a condition where the receiver information does not match the sender information. उसे हम क्या बोलेंगे? एरर. अगर रिसीवर को सेंडर का प्रॉपरली मैसेज नहीं मिल रहा, so that is called the error. During the transmission, digital signals suffer from the noise that can introduce the error. In the binary bits traveling from sender to receiver, that means 0 bit may be changed to 1 or 1 bit may be changed to 0. यही होता है बाइनरी सिस्टम में कि ट्रांसमिशन जब भी आप करो तो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी है, तो वो 0 अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो और सेंडर को रिसीवर को 1 मिल रहा है, सेम वे वाइज वर्जा अगर सेंडर 1 ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर को 0 मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरर. So let we discuss one by one. Error detection probability. How can we identify the error will be occur? So probability of the single bit error, we can identify with the single bit error. Then probability that a frame arrive with the no bit error, 1 minus BER, that is called the no bit error. Probability में आप ये भी फाइंड कर सकते हो. Then probability that a frame arrive with undetected error. आपको एरर मिल रही है, सॉरी डिटेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन एरर जनरेट हो रही है. सो इट इज़ कॉल्ड द रेसिडुअल एरर रेट. इट कवर इन द रेसिडुअल एरर रेट. probability that a frame arrive with no or more detected bit error. So these are the probability where the error is detected. Then एरर डिटेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं. सो ट्रांसमीटर साइड क्या होता है और रिसीवर साइड क्या होता है. ट्रांसमीटर फॉर अ गिवन फ्रेम एन एरर डिटेक्टिंग कोड चेक द बिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा बिट. चेक द बिट आर अपेंडेड टू द डेटा बिट्स. दो मेथड से इसमें कवर होता है. इट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द बिट्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम, an error is detect in the code or not, and second it calculate the data bits and check the appended data bits. Appended bits means जो भी पीछे अटैच है उसे appended data कहते हैं. एंड रिसीवर साइड क्या होता है? इट सेपरेट द इनकमिंग फ्रेम इनटू द डेटा बिट्स एंड चेक द बिट्स. ईच एंड एवरी बिट्स को क्या चेक करेगा. देन कैलकुलेट द चेक बिट फ्रॉम द रिसीवर डेटा. रिसीवर साइड भी हमें चेक करना पड़ेगा. एंड कंपेयर कैलकुलेट द चेक बिट अगेंस्ट रिसीव चेक बिट्स. एंड लास्ट में क्या रिसीवर साइड क्या परफॉर्म होगा? इट डिटेक्ट द एरर अकर इफ द मिसमैच. मीन्स रिसीवर साइड प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड द एरर. हियर सम ऑफ द यूजफुल टेक्निक और पॉपुलर टेक्निक that is used to error detection, like simple parity check, two-dimensional parity check, checksum and cyclic redundancy check. This basic approach is used to error detection and use the redundancy bit where the additional bits are added to facilitate or detection of the error. So let me discuss one by one. Simply parity check. So in simply parity check,
you know the idea or you have the knowledge about the parity bit. So block of the data from the source are subject to check bit or parity bit generator from the where a parity of, यहाँ पे parity आप देख सकते हो कि 1 is added to the block if it is contain the odd number of ones. So यहाँ पे फिगर में आप देखो कि सेंडर के पास जो डेटा है 10011, सो इसमें आप काउंट करो 1 नंबर ऑफ 1 कितने हैं 1 2 एंड 3. सो दिस इज द ऑड नंबर ऑफ वंस एंड जो ऑड नंबर ऑफ 1 है उसके लिए 1 इज एडेड टू द ब्लॉक इफ कंटेन द ऑड नंबर ऑफ 1 एंड 0 इफ एडेड इफ इट इज कंटेन द इवन नंबर ऑफ 1. अगर इवन नंबर हो तो आपको 0 ऐड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है. सो कॉम्प्यूट द पैरिटी बिट क्या करेगा, कॉम्प्यूट करेगा. देन 100011, उसके बाद जो 1 आया वो कहाँ से आया, बिकॉज इट इज द ऑड नंबर ऑफ सेंडर इंफॉर्मेशन. सो इट then transmission media here is used like cable connection that it transfer to the receiver side. So compute parity bit also cover the, it check here the condition that check even or not. So if number is even then it is accepted, otherwise rejected. Okay, 0 is added if contain the even number of 1. This checksum make the total number of ones even, that is why is called the even parity checking. So in this figure compare the result at receiver side. Then two-dimensional parity check. Let me show the two-dimensional parity check. Parity check bit are calculated from each row which is equivalent to the simple parity check. Parity check bit are also calculated from all column. Then both are sent along with the data. At the receiving end, these are compared with the parity bit calculated on the receiver side. So sender information also calculated with the receiver side. Here calculation performed using the all column that are sent with the data. So let me show one by one. So first data is 1001101. Then it contain simple check the parity. Number of 1 is 4, so it is a even parity. Again second data that cover the even parity. So last column indicate the parity bit. Okay, so this is called the parity bit. If number of 1 is become even, so you can add the 0, or if number of 1 is odd, so that is called the odd parity. Here all the data is even number. So calculation, how can we perform the calculation? Summation of the all numbers. So 1 1 1 1 0, again count the 1. So this is the final solution of column and data to be sent, all the information given, and also add the last summation of all the number. So
So this is also sent in the two-dimensional parity check. Let me show the checksum. So what is checksum? Checksum क्या है? In a checksum error detection scheme, the data is divided into the segment. Checksum means अगर आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो, so it is called the segment में डिवाइड कर रहे हो, so it is called the checksum. So each segment is called the m bit. In the senders end, the segment are added using the ones complement. यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसका एडिशन किया जाता है. ओके, एंड कंप्लीट द अरिथमेटिक टू द गेट द सम. द सम इज completed to get the checksum. The checksum segment is sent along with the data segment. At the receiver end, all the receive segment are added using the ones complement. Arithmetic to get the sum is complemented. If the result is 0, the received data is accepted. Here अगर आप रिजल्ट जो है समेशन के बाद ये रिजल्ट आप देखो जो 0 आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेड. डेटा इज एक्सेप्टेड. द साइज ऑफ checksum, here the k is equal to 4 and each and every bit required the segment size. So m bit that indicate the 8 number of 8 that come from the total length of the data. Then this is the simple summation of two numbers. The summation, after the completing the summation of two numbers, the summation is added with the third number as well as fourth number. So we receive the answer like sum. And what is the checksum? Checksum, it is the complement of your sum. So यहाँ पे जो sum किया है उसका अगर आप complement निकालो, ones complement, so that is called the checksum. सेंडर साइड भी हम सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. जो सम कैलकुलेट हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, चेकसम ऐड कर रहे हैं. सो फाइनली हमारा सम जो है वो क्या मिल रहा है हमें, ऑल दी वन, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल दी वन दैट इज कॉल्ड दी ऑल जीरो. सो एक्चुअल इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड यूजिंग दी चेकसम. देन cyclic redundancy check. This is the most important part to check the redundancy. By using the cyclic redundancy, we use the CRC, means cyclic redundancy, a sequence of redundant bit that called the cyclic redundancy check are appended at the end of data unit. So the resulting data unit become exactly divisible by the second predetermined binary number. It use the predetermined binary number. At the destination, the incoming data unit is divided by the same number. Destination side क्या होगा, incoming data जो है वो same number से divide होगा. If at this step there is no reminder, the data unit is assumed to be correct and is therefore accepted. A reminder indicate that the data until data unit has been changed in the transmission and therefore must be rejected. So it is a cyclic redundancy check. साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का एग्जाम्पल भी कवर होता है. सो आप नंबर को कैसे डिवाइड करते हो. देन वायरलेस ट्रांसमिशन एरर. द एरर डिटेक्शन रिक्वायर द रीट्रांसमिशन. वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या होगा, इट डिटेक्ट द एरर एंड वी रीट्रांसमिट द डेटा. डिटेक्शन inadequate to wireless application. So error rate on the wireless link can be high. If the error rate on the wireless link can be high, the result in
large number of retransmission, long propagation delay compared to the transmission time. अगर एरर रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट, रीट्रांसमिशन आप हर बार करोगे, नंबर ऑफ फ्रेम को हर बार रीट्रांसमिट करोगे, सो इट जनरेट दी लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले आपको मिलेगा. सो वायरलेस ट्रांसमिशन, इसके बाद देखते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन एरर. सो वायरलेस डिटेक्शन रिक्वायर द रीट्रांसमिशन. अगर वायरलेस ट्रांसमिशन में कोई एरर आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, रीट्रांसमिट कर रहे हैं. एंड द लैक ऑफ द क्वालिटी एंड क्वालिटी वी रिक्वायर्ड इनसफिशिएंट पर्पज, वी डिटेक्ट एनी इनसफिशिएंट मीन्स sender cannot send the proper data to the receiver, so we use the retransmission in wireless application. The error rate on wireless link can be high. अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एरर रेट ज़्यादा होगा. ओके, इन द कंपेयर ऑफ एरर रेट वायर कम्युनिकेशन. सो इन वायरलेस कम्युनिकेशन अगर एरर रेट आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप क्या करोगे, सिग्नल डेटा को रीट्रांसमिट करोगे. एज एन एग्जाम्पल, आप मल्टीपल्स मेल ट्रांसमिट कर रहे हो रिसीवर साइड. सो रिसीवर साइड क्या होता है कि उसको एट अ टाइम मेल नहीं मिल रहे हैं, तो मेल जब भी नहीं मिल रहे तो आप फिर से मेल ट्रांसमिट करोगे, रिक्वेस्ट हर बार आप इंक्रीज करते जाओगे. सो इससे क्या होगा, रीट्रांसमिशन से लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले जनरेट होगा it compared to the transmission time. So each and every time we retransmit the data, so generate the long propagation. It is the wireless transmission error. Coding and error control. In coding and error control also cover the error detection code. So let me show the automatic repeat request. What is automatic repeat request? Automatic repeat request is a group of error that control the protocols for transmission of the data over noisy or unreliable communication network. Automatic repeat request, it use this protocol reside in the data link layer and the transport layer of OSI. OSI is nothing but the open system interconnection, the reference model. They are named so because they provide the automatic retransmit of the frame that are corrupted or lost during the transmission. ARQ means automatic repeat request is also called the positive acknowledgement with retransmission. What is the working principle of ARQ? In the receiver send the acknowledgement means message back to the sender if it is required a frame correctly. If the sender does not receive the acknowledgement of the retransmitted frame before a specific time period, timeout will occur. The sender understands the frame has been corrupted or lost during the transmission. So sender retransmit the frame again. This purpose is repeated until the correct frame is transmitted. So in the ARQ, automatic repeat request cover the three type of protocol. First one is stop and wait ARQ, go back ARQ and selective repeat ARQ. So what is the functionality of stop and wait protocol? Stop and wait ARQ provide the unidirectional data transmission with the flow control and error control mechanism. It appropriate for the noisy channel. The sender keep a copy of the sent frame. Then
it wait for the finite number of time to receive the positive acknowledgement from the receiver. If the timer expired, the frame is retransmitted. If positive acknowledgement is received, then the next frame is sent in stop and wait ARQ. So this is the functionality of stop and wait protocol. Then let me show the functionality of go back and ARQ. So go back and ARQ that provide the sending multiple frame before receiving the acknowledgement from the first frame. It use the concept of sliding window protocol, and so it is called the sliding window protocol. The frame are sequentially numbered and finite number of frame are sent. If the acknowledgement of the frame is not received with the given time, all the frames starting from the frame are retransmitted. And last one, selective repeat ARQ. So what is the functionality of selective repeat? This protocol also provide for sending the multiple frame before receiving the acknowledgement for the first frame. However, here only the erroneous error or lost frame are transmitted. In the selective repeat, selected lost frame only transmitted. So while the good frame are received and buffered, in this situation finally we receive the proper frame at the receiver side. So this is the functionality of automatic repeat request. ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है GTU एग्जाम में. प्रॉपरली आप फिगर ड्रॉ करके प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना. And the last point that cover the flow control and error control. So what is the flow control? Flow control, it specify the amount of data can be transmitted by the sender before receiving the permission to continue from the receiver. So flow control का सिंपल एग्जांपल अगर आप देखो तो सेंडर की बैंडविड्थ ज़्यादा है. सेंडर जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो उसको पता है कि वो ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन रिसीवर साइड उसके पास बैंडविड्थ नहीं है इतनी कैचअप करने की. तो क्या होगा, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल में फ्लो होगी लेकिन रिसीवर साइड उसको वो कैच नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास प्रॉपर बैंडविड्थ पावर नहीं है. सो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो भी ट्रांसमिट हो रही है वो कंबाइन होगी. That is called the flow control. It specify the amount of data and again it transmitted, retransmitted. So receiving side it cannot be receive proper information. Then protocol data unit arrive the same order they are sent using the sliding window. We can use the protocol data unit as well as sliding window use it for the flow control. Transmitter maintain the list of sequence of numbers to be sent, means number of request, and receiver maintain the list to allow receive. So flow control में क्या करना पड़ेगा, रिसीवर को एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर रिसीविंग दी information. Then error control. And data to be sent, all the information given and also add the last summation of all the number. So this is also sent.
in the two-dimensional parity check. Let me show the checksum. So what is checksum? Checksum क्या है? In a checksum error detection scheme, the data is divided into the segment. Checksum means अगर आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो, so it is called the segment में डिवाइड कर रहे हो, so it is called the checksum. So each segment is called the m bit. In the senders end, the segment are added using the ones complement. यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसका एडिशन किया जाता है. ओके, एंड कंप्लीट द अरिथमेटिक टू दी get the sum. The sum is completed to get the checksum. The checksum segment is sent along with the data segment. At the receiver end, all the receive segment are added using the ones complement. Arithmetic to get the sum is complemented. If the result is 0, the received data is accepted. Here अगर आप रिजल्ट जो है समेशन के बाद ये रिजल्ट आप देखो जो 0 आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेड. बाय यूजिंग द साइक्लिक रिडंडेंसी वी use the CRC, means cyclic redundancy, a sequence of redundant bit that called the cyclic redundancy check are appended at the end of data unit. So the resulting data unit become exactly divisible by the second predetermined binary number. It use the predetermined binary number. At the destination, the incoming data unit is divided by the same number. Destination side क्या होगा? Incoming data जो है वो same number से divide होगा. If at this step there is no reminder, the data unit is assumed to be correct and is therefore accepted. A reminder indicate that the data until data unit has been changed in the transmission and therefore must be rejected. So it is a cyclic redundancy check.